Hello, and welcome to our discussion titled The New TB Manifesto, organized by Survivors Against TB. My name is Chapal Mehra. I'm a public health specialist and I'm associated with Survivors Against TB, an organization that consists of survivors, experts, and advocates who are trying to transform approaches and care to TB in India. Um, Today, I'm joined by a stellar panel. Um, consisting of Dr. Madhvi Bhargava, a very well-known TB clinician and researcher whose work on nutrition and TB has been considered path-breaking. I'm joined by Sandhya Krishnan, a lawyer, an activist, an advocate, and also one of the leading survivors from Survivors Against TB. I'm also joined by Dr. Lance Pinto, who is possibly one of the better known doctors out of Hinduja. He's a leading TB specialist and also does extensive work on COPD. And I'm joined by another one of our survivors, Yashwant Marathe, who is an MDR TB survivor from Mumbai and also one of the leading advocates in the Maharashtra region. Today's conversation is a timely one because it's the eve of World TB Day, and we thought we should get together to discuss uh, what would a new TB manifesto or a new set of approaches and outlines for our conversation around TB look like. Conversations with community members and experts tell us that there is an urgent need to build on current achievements, but also to look forward to a set of new TB strategies. I'm going to continue to have this conversation, but I'm going to make it bilingual, so also speak in Hindi. आजकल जो बातचीत हो रही है टीबी के बारे में, उसमें हम बहुत कुछ सुनते हैं कि हमें टीबी एलिमिनेट करना है, हमें टीबी को ख़त्म करना है जड़ से, मगर उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, and how should that come together as a manifesto? The word manifesto has been used very timely at this point क्योंकि everybody knows कि India is going into its election. भारत किसी भी वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा है और ये नेशनल इलेक्शन है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मैनिफेस्टो में दिखाना है कि वो हमारे स्वास्थ्य और हमारी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं। और क्योंकि टीबी भारत की शायद सबसे ज़्यादा और ज़्यादा फैली हुई और ज़्यादा तकलीफ दे इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसके बारे में बातचीत करना इस वक्त और भी ज़रूरी हो गया है। एक बात और कह दूं कि ये एक अनयूजुअल पैनल है क्योंकि इसमें रिसर्च और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो इक्वली रिप्रेजेंटेड हैं because it brings together both these mindsets. What we are really trying to think is what is the right approach. सही direction क्या है इस भीषण स्वास्थ्य समस्या को एड्रेस करने के लिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्च से हम सीख सकते हैं? क्या ऐसा अर्जेंट काम है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जिसको हम इस मैनिफेस्टो के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जो सिर्फ सरकारें जो बनती हैं उन्हीं के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी रेलेवेंट है। क्योंकि टीबी इज रियली अ कलेक्टिव प्रॉब्लम व्हिच नीड्स अ कलेक्टिव सॉल्यूशन। So, keeping that in mind, I'm going to actually start with one of our survivors. सबसे पहले I'll turn to Sandhya, because Sandhya, you have accessed care and you have worked with a whole set of survivors and also patients. It's an interesting question because सब लोग कहते हैं we should get high quality care, but you're an end recipient of that care. So, what is high quality care for people who are affected by TB, जो TB से जूझ रहे हैं, and what are the key metrics जिससे हम इस high quality care को identify कर सकते हैं? How would you use that as a way to define high quality care for communities? Sandhya. यस चपल टीबी ऐसी डिजीज़ है कि जब हमें होता है
हमें समझ में भी नहीं आता है, like till we've had TB we don't even know what exists in this entire world. So I think it begins with हमें समझ तक नहीं आता है कि high quality care क्या होता है. But as somebody who's been through that journey, I will say that दो चीजें जो we always talking about this, जो होना चाहिए comprehensive and holistic, and that is from the time we enter the system till the time we're reintegrated. So from treatment to have accurate diagnosis, that's where the problem starts. Speedy access to medication, and then support through the journey of our entire treatment, not just of ourselves, but because our families, our communities are involved, to get them involved as well, sensitizing, helping us. Our work gets impacted, our family relations get impacted, nutrition, mental health. And in terms of metrics, Ajkal, we should really leverage technology. We should leverage mobile phones, statistics, and metrics can be around how effective different drugs are on different kinds of patients with different comorbidities. We can use technology for awareness and how effectively these are reached. That could be a very important metric as well. And finally, metrics around adherence, how many people are actually completing the treatment. And above all else, this data is essential for us to plan I hope, our last steps towards TB elimination, without which I don't think we can ever say that we live in a TB free world. Thanks. That's a whole set of things that you've mentioned. बहुत सारी चीजें हैं, and I am going to actually take them one by one and try then run them through various people in the panel, because I think we are lucky enough to have experts in some of these areas. I think the first step is, of course, awareness and diagnosis. And Dr. Lance, I wanted to ask you, how do we address this delayed diagnosis, inaccurate diagnosis issue? There is a lot of talk nowadays कि there is so much more technology से बड़ी जल्दी हो जाता है. Especially I'm talking of this is not a problem in urban cities alone, right? This is a much graver problem in a way. Misdiagnosis and delayed diagnosis in rural communities. जहाँ वहाँ पर when we go, तो we realize कि एक्सरे के लिए इतना ट्रैवल करना पड़ता है. तो वेदर एक्सरे कुछ बताएगा भी कि नहीं, ये तो बात की बात है. बट इवन फॉर दैट, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हियर, इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन दैट. Hi, Chapal, and thank you for inviting me to this very important discussion. I think when you talk about how to improve diagnostics, how to improve people getting into the system of treatment, I think you could break it up into thinking about TB or think TB. You then test for TB, and then you try and complete the loop when it comes to misdiagnosis, right? So you can only test for TB if you thought of TB. And, traditionally, even from the time we were in medical school, we've always been taught about cough for 2 weeks, cough for 2 weeks, right? And a recent large study looking across individuals from across the world have found that cough is not a majority symptom. A majority of patients with TB will not necessarily have cough as their major symptom, which is why you need to start thinking beyond just the cough. So things like weight loss, things like having a fever for a prolonged duration, loss of energy, lethargy, or fatigue. These are all different symptoms in different permutations and combinations that could represent TB, and we need to start thinking on those lines. The second thing is, I think it's always easier to start with the so-called low-hanging fruit. So if an individual has TB, first screen the immediate contacts in vicinity of the individual, right? So that's the highest yield that you can achieve when you actively look out for patients with TB. The other thing is, we've traditionally always waited for patients to have symptoms for a prolonged period and then reach the healthcare system. I think a bit of active surveillance where you actively seek out such individuals would definitely help arrest transmission at an earlier stage. So this is thinking about TB and also thinking about vulnerable groups, individuals who are malnourished, individuals who have diabetes, who have other immunosuppressive conditions. We know that they are more likely to get TB, and therefore we need to focus our energies on such individuals when it comes to screening. Now, once you've thought about TB, the next step is obviously diagnostic tests, and point of care molecular diagnostic tests are now what is recommended. So trying to make sure that somebody
has access to a point of care molecular diagnostic test is a huge step forward again in detecting the disease early. And of course, as Sandhya mentioned, we need to leverage newer technologies. So there are AI based tools which are being looked at for the diagnosis of TB. Smartphone penetration, for example, is extremely high in India. So looking at acoustics of cough, looking at symptom based diagnosis or screening for TB based on apps, based on messages sent across. I think these are technologies that need to be leveraged to improve diagnostics. And the last part, which you alluded to was misdiagnosis and people not picking up TB. I think there should be some sort of a feedback mechanism that when a person finally gets diagnosed, to kind of look back at how many physicians they visited before they got diagnosed, and somehow communicating it to those physicians that this person was eventually diagnosed with TB, which then improves the diagnostic ability or the thought process of physicians involved in the field. So I think, it's a combination of multiple things that could possibly improve the detection of TB and therefore result in people starting treatment quickly and breaking the chain of transmission. I'm very glad you mentioned that meta analysis जो अभी globally उस पे निकला है, which shows कि you do not need necessarily to have cough to be reporting for TB. And it is actually strange because हमारी सारी public communication, all our public messaging is built around 2 weeks of cough, 2 weeks of cough, and then the other things follow. 2 weeks of cough with fever or weight loss or night sweats and this and that and the other thing. But I wanted to ask you a very small follow-up question, if you could touch upon this. TB is such a widespread problem. हिंदुस्तान में हम देखते हैं, every family is affected by it. Why are doctors not prescribing a TB test early? People are very keen to write an HIV test for many people in a certain age group, but I've never seen people. Is it because of the stigma? Is it something that the health system teaches them? Is it something health education? Because when I talk to doctors, उनको सबको पता है कि it's a widespread problem. But why is the TB test not being written? So I think this is a complex question, right? When people go to their primary physicians in India for an ailment, whatever it might be, whether it's cough, whether it's fever, uh, upfront they usually do not want to be given any tests whatsoever. They want some medication to be very often prescribed, and I think that's one of the issues, that treatment is started very often empirically without any investigations being done. The second problem is that when a patient is not better, very often there is doctor shopping. So you go to another doctor, so the dots are not connected that this is the same illness. The next episode is again treated in isolation without any tests being done. The third thing, of course, is the fact that there is stigma. If a patient comes to a doctor for the first time and the doctor says this could be TB, the patient very often feels stigmatized. There is an element of denial that, how can I have TB? Nobody in my family has TB. I've never had TB. These are the things that we routinely listen to when we prescribe it for patients. There is always this, how can I have TB? So this normalization of the fact that TB could happen to anyone is something that is the need of the hour. This us versus them it creates a lot of problems where you just assume there's a certain stereotype that you have of a patient who has tuberculosis, and you don't identify yourself with that stereotype, and this leads to a lot of denial. So I think it's a combination of all these factors that leads to tests not being prescribed routinely for tuberculosis. And of course, some individuals don't produce sputum, some individuals don't like the fact that they have to give their sputum for testing, and that creates another barrier. So I think blood tests and x-rays are far more socially acceptable than sputum analysis, as a broad statement. I think ये बहुत interesting है because this somehow complicates, and something that we have always said, that TB is also is a very widespread interplay जो affected individual है और उसकी family है, उसके दिमाग में होता है कि टीबी का परसेप्शन क्या है, टीबी कैसे होता है, टीबी क्यों हो गया, कैसे हो सकता है मुझे, ये भी बहुत important issue है. Madhvi, I wanted to turn to you. Your and Anurag's work on the area of nutrition has been remarkable. I mean, the whole world is talking about it right now, and in LMICs, it is especially important in countries like India.
also because we've been asking for many years कि ये जो निक्षय पोषण योजना है इसका आप ना बढ़ाइए अमाउंट, ये कम है, मगर आप तो उससे एक स्टेप आगे गए हैं और यू आर टॉकिंग अबाउट रियली the role of nutrition as prevention, which is an important idea. So tell us a little bit about the rations trial, and also in sort of conversational way, what can policymakers take away from that? Because research को वो हमेशा कहते हैं ये सब पे apply नहीं होती, ये हमें नहीं समझ में आई abstract. What according to you are the policy takeaways also? बहुत बहुत धन्यवाद चपल, मुझे इस मीटिंग में बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रेशंस ट्रायल जो अभी इतना चर्चा में है, इट इज़ नथिंग न्यू. मेरे ख्याल से जो अच्छे डॉक्टर्स क्लिनिशियंस हैं लांस की तरह, हमेशा न्यूट्रिशन की बात करते रहे हैं. टीबी में जो भी अच्छा केयरिंग फिजिशियन होता है उसको पता है कि टीबी में गुड हाउसिंग, गुड न्यूट्रिशन दोनों बहुत ज़रूरी है. तो ये सिर्फ रेशन की बात नहीं है. इवन 2013 जो WHO का डॉक्यूमेंट आया जिसमें टीबी न्यूट्रिशन को बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताया गया, उसके पहले भी लोग करते ही थे. जो हमने किया वो सिर्फ ये किया कि हमने सिस्टमैटिक वे में उसको स्टडी किया और एक एविडेंस बनाया ताकि आप जैसे लोग भी उसमें जुड़े और आगे ले जा सकें. तो कुपोषण जो है वो हमें पता है कि रोग प्रतिकारक शक्ति उससे कम हो जाती है, ना केवल टीबी के लिए और बीमारियों के लिए. तो साइड इफ़ेक्ट्स मरीज को ज़्यादा होते हैं जब वो दवाई लेते हैं. इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है लंबे समय के लिए, और जो संक्रमण है वो जल्दी साफ नहीं होता है. जैसे स्पुटम होता है वो जल्दी नेगेटिव नहीं होता है जो कुपोषित होते हैं उनमें, और मरीज दवाई छोड़ सकता है. इवन जब दवाई खत्म हो जाती है, इलाज खत्म हो जाता है, तो उनकी जो क्षमता है काम करने की, वापस काम पे जाने की, अपने पैरों पे खड़े होने की, वो भी कम हो जाती है. सो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन टीबी केयर. So what Rations did was, as you said, we went one step further. हमें देखना था कि पोषण फूड बास्केट देने से मरीज को क्या होता है, और दूसरा एक पॉपुलेशन है जो उनके घर के लोग हैं. जैसे डॉक्टर लांस ने बताया कि उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड दे आर नेक्स्ट इन लाइन. तो हमने दोनों पॉपुलेशंस को समझने की कोशिश करी, अगर इनमें हम फूड बास्केट देते हैं तो क्या होता है. तो बहुत ही सिंपल इंटरवेंशन था, वेरी इंट्यूटिव. तो करीब 3000 मरीजों में हमने फूड बास्केट दिया. उनको तो हम रैंडमाइज नहीं कर सकते हैं कि आधों को खाना दे, आधों को ना दे और देखे क्या होता है, वो तो करना संभव नहीं है. तो उन सब में फूड बास्केट दिया गया, जिसमें चावल के अलावा हमने मिल्क पाउडर भी दिया और तेल दिया, सत्तू दिया. झारखंड में क्योंकि हमने ये स्टडी करी थी, वहाँ पे सत्तू कॉमनली खाया जाता है नमकीन तरीके से. कुछ लोग लड्डू बना के खाते हैं, पराठे बनते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं. तो हमने मरीजों को ये दिया, और उनके जो जैसे 2800 मरीज थे, तो आधे मरीजों के घर वालों को हमने फूड बास्केट दिया, जिसमें अगेन वेरी सिंपल थिंग, दाल एंड राइस पर पर्सन. 1.5 किलो दाल हमने एक्स्ट्रा दी थी. और हमने ये देखा इसके जो 6 महीने तक, जब तक मरीज दवाई लेता है तब तक हमने ये दिया. तो हमने ये देखा कि 6 महीने के बाद मरीजों के तो अच्छे आउटकम्स रहे ही, और 2 साल तक जब हमने ये फैमिलीज को फॉलो अप किया, तो नया टीबी जो था घर वालों में, वो करीब 40% से मैं कहूँगी 50%, 49% तक कम हो गया. तो ये जो अभी का अपना वैक्सीन है, और अभी तो बन ही रहा है, पूरी तरह से बना भी नहीं है, बिल्कुल उसके करीब है. तो जस्ट बाय गिविंग द सिंपल इंटरवेंशन, इफ वी आर एबल टू रिड्यूस टीबी, नए टीबी को हम रोक सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास एक टूल है जो दवाई के साथ जरूरी है. ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक्स चाहिए, दवाई चाहिए, इसको तो हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं. प्रिवेंशन के लिए अभी हमारे पास टीपीटीपी है, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट
कई तरह की रेजीम्स आई हैं, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पोषण का भी ध्यान रखेंगे तो शायद हमारी मेहनत जो है वो ज़्यादा सफल होगी। तो ये तो हो गया हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स के बारे में, बट पेशेंट्स में भी हमारे पेशेंट्स में मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई। करीब 80% से ज़्यादा मरीज जो थे हमारे वो बहुत ही कुपोषित थे। तो ये तो ज़रूरी है ही, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उनमें मृत्यु दर कम हो गया, और जो लॉस टू फॉलो अप का बड़ा प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर लांस will agree with me that people stop medication, that was taken care of, and we had a very low loss to follow up in spite of COVID, and whatever loss of follow up occurred was mainly because of COVID related migration, etc. So less side effects, nobody stopped treatment, so acceptability was not a problem. Yes. नो, आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी बात है, बिकॉज इससे 3-4 चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए। एक तो ये है कि जैसे आप कह रही थी, पोषण ही एक वैक्सीन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर हम जानते हैं कि बहुत लोग कुपोषित हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ कि साइंटिफिक एविडेंस जो हमें बताता है कि वेस्ट में, एंड आई थिंक रिसेंटली डॉक्टर लैंस ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वेस्ट में जब ये गिरा ही था, इनका दर, इनके जो नंबर्स थे, वो न्यूट्रिशनल चेंजेस की वजह से हुए थे, बेहतर पोषण की वजह से हुए थे। इसकी ये तो हर वक्त एक बड़ी वैक्सीन, एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। कभी-कभी बेसिक्स के ऊपर फोकस करना भी हमें बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदे देता है। और तीसरी चीज़ जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम जो आजकल बात कर रहे हैं टीबी को हराने की, उसको एलिमिनेट करने की, क्या वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बिना, फूड सिक्योरिटी के बिना हमारी पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल भी है कि नहीं, ये कहना, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं इसी सवाल को आई ऑल्सो वांट टू टेक इट टू यशवंत। यशवंत, आपको पता है सरकार की निक्षय पोषण योजना के बारे में, और आपने उसके बारे में काम भी किया है। अभी जो दर है 500 का, हमें जो लोगों को दिया जाता है, और निक्षय मित्र भी शुरू हुआ है, आप जानते हैं, जो पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं और आपको ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तो किस तरह की सहूलियत, किस अमाउंट की या किस तरह की फूड सिक्योरिटी और तरह की सहूलियत चाहिए होती है एक अफेक्टेड इंडिविजुअल को और उनकी फैमिली को? क्योंकि जैसे माधवी बहुत इम्पोर्टेंटली कह रही थी कि सिर्फ पेशेंट पे फोकस करना तो एक बात होती है, मगर ये होती तो एक तरह से कभी-कभी पूरी फैमिली या पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। थैंक यू चपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंटली जो अमाउंट दिया जा रहा है वो 500 रुपीज है। वो हम सभी को पता है कितना यूजफुल होता है, और वो टाइमली मिलता भी नहीं है। मिनिमम 2 to 3,000 रुपीज अ मंथ अगर एक पेशेंट को दिया जाए तो उससे भी उसने न्यूट्रिशनल जो भी नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाता। सेकेंडली, अभी जैसे मुंबई में निक्षय मित्र जैसे ये कैंपेन ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, तो इससे काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 से भी आप न्यूट्रिशन दे सकते हो, और इंडिविजुअल पेशेंट को भी आप दे सकते हो। इसीलिए कोई भी इंसान निक्षय मित्र बन सकता है, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को ये दिया जा रहा है। सेकेंडली, अगर जो फूड बास्केट की बात है, अगर हम अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर जो हमारे घर में रेशनिंग होता है दाल राइस, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल जैगरी हो गया, पीनट्स हो गए, हमारे डेट्स हो गए ना, ये अगर जो चीजें हैं ना वो और ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऐड कर दी, तो ये भी ज्यादा काफी बेटर होता है, जो कि प्रोटीन इंटेक लेने के लिए। हेलो। हाँ, और ये भी बहुत ज़रूरी है जो आपने बात कही कि सिर्फ दाल चावल से पूरी फैमिली का सहारा चलना कुछ हद तक
हम अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिक मिनिमम प्रोवाइड करना बहुत है, बट एक्चुअली कोई इतनी ज़बरदस्त दवाइयाँ खा रहा है, दे आर ईटिंग सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड, आर वी एबल टू गिव देम इनफ न्यूट्रिशन? ये बहुत ज़रूरी बात है। और इसके दो हिस्से हैं, है ना। एक तो फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है कि आप पहले से ही अपनी पॉपुलेशन को इतनी न्यूट्रिशन देने की कोशिश करें कि टीबी एक्टिवेट ना हो, क्योंकि वो खुद एक वैक्सीन की तरह एक्ट करता है। और दूसरा कि जब वो उनको अफेक्टेड है, then they and their family should get enough nutrition. These are very, very important points for policymakers, because I think those are the things that you can act on easily, rather than big vaccines immediately and major technological advancements. I want to take up the issue of treatment, Lance, and I'm coming towards you because you're also a treating clinician. You work at Hinduja, which sees some of the worst kind of cases. Hinduja is sort of considered also a place where some of the most complicated kinds of drug resistance is treated. So there's a lot of understanding there. Treatment for TB is long. It is also with toxic side effects. If you have MDR TB or other kinds of drug resistant forms of TB, treatment is very, very long, very painful. तो उसको बर्दाश्त करना ही एक तरह से मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर आई वांट टू टर्न टू यू एंड टॉक अबाउट, बहुत बातचीत हो रही है आजकल इंटरनेशनली शॉर्टर रेजिमेंट्स की, और किस तरह की ये बातचीत भी हो रही है कि ड्रग रेजिस्टेंस को किस तरह कंट्रोल किया जाए, नाकाम किया जाए, हाउ डू वी कंट्रोल इट। तो उसमें एक तो शॉर्टर रेजिमेंट्स पे इफ यू कैन से समथिंग, एंड आल्सो अबाउट कंट्रोलिंग ड्रग रेजिस्टेंस, बिकॉज it's a massively, India has the second largest number of drug resistant TB cases in the world, I'm told. So how do we address this issue? I think what's extremely important is to let go of some of the indifference and neglect that we've shown to patients with TB. It wasn't too long ago where जहाँ ज़्यादातर TB के patients जिनको MDR TB होता था उनको 6 महीने रोज इंजेक्शन लेने पड़ते थे, और वो इंजेक्शन के काफ़ी टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। इंजेक्शन से आपका सुनना कम हो सकता था, किडनीज पे असर होता था अक्सर, और हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया था कि कोई लोगों को इस प्रकार की बीमारी होती है और उनको लेना पड़ेगा, इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। इट्स अ लॉट ऑफ एडवोकेसी एंड इट्स अ लॉट ऑफ patient support groups which came forward and sensitized the world to the fact that this is unacceptable. And I think as a result of some of that advocacy and interest in TB, we now have all oral regimens. So we are not doing 6 महीने के इंजेक्शंस आजकल दिए नहीं जाने चाहिए लोगों को, क्योंकि 6 महीने के सिंपलर शॉर्टर रेजिमेंट्स जो सिर्फ गोलियों से जिनसे टीबी को ठीक किया जा सकता है वो अवेलेबल है. So I think it's extremely important to roll out these regimens from a humanitarian perspective, not just from a fact that they are very effective against TB. Of course, they are great drugs, but also from the fact that I don't think it's fair to expect people to take treatments for 2 years and longer sometimes. And the rollout of these regimens, I think, should be a big priority. So अगर 6 महीने में 3 गोलियों के साथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टीबी क्योर हो सकता है, तो हाउ कैन वी ethically continue to tell people that they need 2 years of treatment with injectables sometimes, etc. So I think that should be a top priority in terms of rolling out shorter regimens to individuals. Now at one end of the spectrum, we were completely indifferent to people with MDR TB and saying that accepting the fact that they received injections. Now that oral regimens are available, there are people who are saying we have to protect these drugs, we cannot give them to everybody because we will lose these drugs. And I think that's again a slightly circular reasoning, that you're moving forward in terms of development, but you want to protect your drugs, and whom are you protecting it for? You're protecting it for potentially the rich individuals who might get these forms of TB as well. So I think to address that issue, that we have new drugs, but eventually if you use these new drugs indiscriminately, you might get resistance to these drugs. So I think drug susceptibility testing for bedaquiline, for a drug like bedaquiline, for example, is very important. We should be able to know when people get resistant, so then we can take measures to kind of protect their contacts from the spread of such resistant strains. So universal bedaquiline DST testing or susceptibility testing, I think, is something that should
be a part of it. So you roll out a new drug, you have to have DSTs along with that rolled out at the same time so that you can protect the drug. Of course हम नहीं चाहते हैं कि ये दवाइयों को केमिस्ट में बेचा जाए ताकि कोई भी शुरू कर सकता है और फिर if it's not given properly you'll have a problem. So we want these drugs to be monitored, but at the same time I don't think it's fair to deprive anybody of these medications. And I think private public partnerships are where potentially you could get experts on board if you don't have the know-how at a local level to roll out these drugs. I think some of these medications need to be tailor-made to individuals, like you just mentioned. Some of the resistance patterns that I see at my hospital will not fit a standard textbook. You will not be able to give a standard textbook definition ki agar ye hota hai to ye karo. You need experts who can fine-tune medications sometimes, and I think getting experts on board through partnerships is extremely important. And I think since we're talking about a manifesto here, I think it's important to kind of demand from our policymakers that individuals should have access to the latest drugs and the latest proven regimens, especially since they are so patient friendly. So I don't think it's fair to continue to deprive our patients of state of the art drugs because it affects, we just assume that it doesn't affect us, it affects some other people, and stigmatize MDR TB. I think ये बहुत ही interesting बात you've just said, which is about how patients can the people who are affected should have access to all the better, shorter regimens on humanitarian grounds. But there is the different school of thought which says कि भाई इन ड्रग्स को कंट्रोल करो बिकॉज इंडिया में वाइड स्प्रेड मिसयूज हो चुका है एंटीबायोटिक्स का, और ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत पुरानी जानी वेल डॉक्यूमेंटेड बात है कि खासकर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ट्रीटमेंट में तो जैसे कि इट्स अ गेम ऑफ चेकर्स कि जो मनाए जैसे मनाए लोग लिखते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगह पे अच्छे क्लिनिशियंस भी हैं, दैट्स नॉट अ इशू. द other thing that is important is that how do we ensure what is the best, most optimum balance? Because right now, as we are talking of access to drugs, we're also hearing of a widespread drug stock out in the in the public sector, right? I mean, I've been talking to advocates, and there is several states have been mentioned. We are still verifying the extent to these stockouts, but there is no doubt that there are stockouts. We've heard from the grassroots. तो ऐसे में shorter regimens का क्या role होता है, Lance? Are they easier to take, and are they better to manage also in the health system? So intuitively, I would think in terms of logistics, just managing a 6-month treatment regimen would be far easier than managing a 2-year regimen. So just in terms of logistics. From a patient perspective, I think one of the biggest problems with the management of TB has been adherence. कि लोग 2 साल तक ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करते हैं, तो अक्सर जब 6 महीने में उनको बेहतर महसूस होने लगता है तो खुद से ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, और अक्सर उससे रेजिस्टेंस और भी खराब हो जाता है. तो अगर आप उस एंगल से भी सोचो, छोटे रेजिमेंट्स जो 6 महीने में खत्म हो जाते हैं improve the probability of people adhering to treatment. Now, to me, from what I understand from a policy perspective, I think the cost is the only reason to not roll out these regimens across the country. And I think that's a little myopic, because if you look at the long-term costs of having MDR TB amplify, if you look at the long-term logistic costs of stocking 2 years of treatment for each patient, of tracing, of trying to find individuals who are not adhering to treatment, again, intuitively, I would think it would be far easier to manage a shorter regimen. That being said, the treatment of standard drug-sensitive TB is 6 months of tablets, and as you rightly point out, there does seem to be drugs which are not available in some states of the country right now. So I think the India TB Forum has just written a letter about it, pointing out the fact that there are stockouts of drugs. So if the same thing were to happen for MDR TB, where you're relying on a focused 6 months of treatment, and then midway through that treatment, if you have a stockout, that could be a potential disaster. So I think we need to get the system in place to make sure that those shortages of drugs do not happen. But I think intuitively, both from a patient perspective as well as from a logistic system perspective, shorter regimens totally make sense to me.
I think it's thank you for saying that, but I think also one has to consider the fact that sometimes the access to these drugs, for 2 years causes, like you were saying, a lot of adherence problems. And this is something we've heard from affected individual after affected individual. One of their biggest concerns is कि ये खत्म क्यों नहीं होती दवाई, खासकर for MDR TB. It's mentally exhausting, it's emotionally and of course physically exhausting with very bad side effects. I want to take this adherence question to Yashwant. Yashwant, you have worked a lot with people who are affected by MDR TB, and you also took the older regimen. आपने जब लिया था तो हमारी बातचीत हो चुकी है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। इसमें आपने अडियरेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था कि हर जने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतनी आसानी से ये ड्रग्स ले सकें। फैमिली सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और कम्युनिटी सपोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ फॉर ट्रीटमेंट अडियरेंस, and I don't want to use the word adherence again and again because again it becomes a technical term, but for patients, what are the factors that can improve this treatment completion, complete कर पाना और with ease? क्योंकि ये भी हमें जब हम पॉलिसी मेकर्स के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं फ्री तो है ट्रीटमेंट, आप लोग पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे, क्या दें अब और। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज जब हम कहते हैं इनको ये चाहिए तो कहते हैं आप लोग तो सभी कुछ मांगना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी आई वांट यू टू आंसर दिस बिकॉज इफ आई से इट विल साउंड ऑल रॉन्ग एंड आई एम कॉन्स्टेंटली टोल्ड कि आप तो सभी कुछ मांगना चाहते हैं। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को और केयर गिवर को टू द बोथ जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टीबी, न्यूट्रिशन, अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट, वो सारी दे देनी चाहिए। सेकेंडली, पेशेंट की और उसके केयर गिवर की रेगुलर इंटरवल्स पे काउंसलिंग होनी चाहिए। साथ ही में जब जब पेशेंट को अगर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो उसको टाइमली और एक्यूरेटली मैनर में दे देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर ये तो सारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पेशेंट का एंगेज है पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स और उसमें अगर टीबी सर्वाइवर्स है तो उसको थोड़ा इमोशनल हेल्प मिलती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इयर्स का है तो उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं, तो एक आपका फेज खत्म होता है तो दूसरा फेज शुरू हो जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ना, तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस होते हैं, पर उसके साथ डील कैसा करना है पेशेंट को पता नहीं होता, वो सिर्फ उसी को पता है जिसने सारा झेला है। तो टीबी सर्वाइवर भी आप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेशेंट के अडेरेंस को मेंटेन करने के लिए। तो टाइमली मैनर में उसको मोटिवेट करेंगे ना, आने वाला जो अभी जो उसका फेज चल रहा है उसको कैसे डील करना है उसके साथ बता दिया जाता है। साथ ही में जो एडीआर होते हैं ना, डॉक्टर तो आपको प्रिस्क्राइब ऑलरेडी दवाई चल रही है पेशेंट की ना, फिर एडीआर होंगे उसकी अलग दवाई होती है ना, फिर इन सबको कैसे टैकल करना है वो एक सर्वाइवर बता पाता है। साथ ही में अगर पेशेंट को इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, इंडिविजुअल लेवल पे अगर उसको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग मिल जाए तो ये भी अडेरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। थैंक यू। नहीं, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं एंड आई थिंक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मगर ये अगर कोई पॉलिसी मेकर सुन रहा हो तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्री ट्रीटमेंट और फ्री डायग्नोसिस हमेशा तो उपलब्ध होता भी नहीं है, एंड व्हेन इट इज़ अवेलेबल ऑल्सो उसके लिए वेट करना पड़ता है, और वो बेस्ट क्वालिटी है कि नहीं है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने सबसे वल्नरेबल पेशेंट्स को बढ़िया केयर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उसका ट्रस्ट इन द सिस्टम कितना है। फिर आप कहते हैं कि एडहेरेंस नहीं है, ये नहीं है, तो एक इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। इट्स नॉट अ वन वे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रीट कि हम किसी से कह दें और वो काम कर लें ऐसे। तो Madhvi, I wanted to turn this question to you also because you've done a lot of work on the grassroots. And यहाँ पर बात हुई community support की, and you work with tribal communities also. This is very important because they often, and other communities also, often get left out of the conversation. कि भाई ये हैं ही पिछड़े, इनके यहाँ होता ही है, यहाँ बड़ा वाइड स्प्रेड है, इसको बड़ा नॉर्मलाइज किया जाता है कि ये हो ही गया, यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ पर इनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं थी, यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। इसके बारे में आई ऑल्सो वांट टू आस्क
about the role of the community, because आपने previously एक conversation में कहा कि community में stigma कम था, तो कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम्स जो होते हैं टीबी में, अब इसका क्या फॉर्म लेते हैं? क्या ये सब कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप हो गया या जनरल कम्युनिटी सपोर्ट हो गया? How is that helpful to address the affected person's practical but also psychological and emotional needs, right? Because that person, यहाँ पर इन communities में community एक सरकार से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक तरह से. The community defines who you are and how you function. So tell us a little bit about your work there. What is the role of the community and community support groups? Yeah, thank you, Chapel, for asking that. And yeah, I have worked both in urban as well as rural areas and tribal and non-tribal population. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रूरल एंड ट्राइबल पेशेंट्स है वो कैसे अलग होते हैं हमारे शहरी मरीज़ हैं. और मैं एक्चुअली मरीज़ हमेशा बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इट्स फैमिली विच इज़ वल्नरेबल. Because usually they are young people, productive individuals, breadwinners of the family, and they are the ones who get affected. तो फैमिली एक तरह से काफ़ी वल्नरेबल होती है. तो ये जो दोनों पॉपुलेशंस में फ़र्क ये है कि गांव में कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर होता है कि because of a close-knit fabric, which is actually diminishing when it comes to when they migrate to urban areas, they become faceless individuals, and their ability to access what is also their right. जो हम फ्री दवाई फ्री डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं वो उपलब्ध है, वो भी पता मुश्किल होता है. और दूसरा है कि हमारा प्राइमरी केयर अभी इतना कोई सुदृढ़ नहीं है कि कोई जाए तो सब कुछ होता ही है सिस्टमैटिकली. तो ये फ़र्क हो जाता है दोनों पॉपुलेशंस में, और इसीलिए कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है. जो अर्बन एरियाज़ में मुझे लगता है कि जो पीयर ग्रुप्स हैं, सर्वाइवर ग्रुप्स हैं, दे प्ले अ मेजर रोल. अभी जो दूसरा नया इनिशिएटिव जो सरकार का है निक्षय मित्र का, तो मुझे क्या लगता है कि निक्षय मित्र अभी जो है वो न्यूट्रिशन पे काफ़ी जोर दे रहा है. फूड बास्केट, एंड आई सी लॉट ऑफ पिक्चर्स अबाउट दैट. बट वन थिंग दैट वी नीड टू लेवरेज इज दैट बहुत सारी और ज़रूरतें जो होती हैं जो यशवंत ने बताई, तो ये निक्षय मित्र जो है वो चीज़ें वो कर सकते हैं. दे नीड ट्रेनिंग एज वेल, sensitization as well, because as I said, sometimes when I talk about nutrition, I'm worried that I will push aside more important pressing clinical problems. And one thing is that when a patient has MDR, we know that the household contacts need extra nutrition support, because their prophylaxis is really right now not very well defined as far as I know. और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो हम हमेशा मिस करते हैं, जो मैंने देखी मतलब ग्राउंड पे, वो टीबी और डायबिटीज़ की है. डायबिटीज़ स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से हो रही है, बट एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है तो उनका ट्रीटमेंट एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसको सीएचसी या प्राइवेट डॉक्टर में जाना है, उसको दवाई सस्टेन करना, बार बार टेस्ट करना. तो इसमें जो कम्युनिटी सपोर्ट और पीयर ग्रुप सपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. और लास्टली मैं जस्ट जो मैं रेशन के बारे में बात करती हूँ उसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हम जो मृत्यु दर कम होने की बात करते हैं, नया टीबी केसेस कम हो गए उसकी बात करते हैं, दवाई मरीज ने पूरी करी कि नहीं उसके बारे में बात करते हैं. जो हम पेशेंट सेंटर्ड आउटकम की बात करते हैं जो मरीज के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि वो वापस काम पे जा रहा है कि नहीं. हमने दवाई 6 महीने दे दी, खत्म हो गई, उसके बाद मरीज का क्या हुआ. तो जो हमने शुरू किया, हमारे 3% मरीज जो थे वो अपने पैरों पे खड़े थे और कुछ ना कुछ काम कर पा रहे थे जब शुरू किया हमने रेशंस. और फूड सपोर्ट के बाद 6 महीने के बाद जो हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि 75% मरीज जो थे दे वर एबल टू वर्क एंड दे वर फंक्शनल. So that becomes a very important patient-centered outcome, I would say, and that is why I feel not just nutrition support, but all kinds of social support systems become extremely important, and our TB programs are extremely overstretched. तो जब मैं nutrition support, social support की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि community has to chip in, and we need to have systems in place where community can come in.
and PDS is one way to support the nutrition system. But at the moment, I feel Nikshay Mitra is too dependent, donor dependent, and CSR dependent. We need to expand it so that we will need to map the areas where it is imperative to give rather than optional measure. Thank you. No, I think ये बहुत ज़रूरी बात, very very important points, because ये life after TB का जो issue होता है, इस पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते, और हमें बार बार ये सारी अपने पेशेंट्स और सर्वाइवर्स के काम के थ्रू पता लगता है कि ये सब जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या पब्लिक सेक्टर में भी जाते हैं, ये डेट, इनका काम तो जाता ही जाता है, ये लोग डेट भी अक्वायर करते हैं, और ये टीबी फिर एक लॉन्ग टर्म डेट, फैमिलीज डेट रिडन हो जाती हैं, मतलब कि आप लोअर मिडिल क्लास से सीधे पॉवर्टी में ट्रांजिशन कर जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यही चीज़ है जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए इस तरह लोग उठ रहे हैं, मगर one episode of TB to the main bread earner of the family can create a cycle of debt, मतलब कि आपकी पूरी फैमिली जो जिस रास्ते में जा रही है उससे बेकार हो जाएगी। और दूसरी बात ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि are they employed and employable after this? This is very important, because this actually survivors ask us all the time कि देखिए अभी तक न्यूरोपैथी है, अभी तक ये है, काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? और एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं देता स्टेट, और कोई भी इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो these are very important points. I also want to take the role of community and support groups and ask you, Sandhya, because you were talking about, we worked on survivor networks and things like that, and the role of community Madhvi highlighted is very important at almost all levels. But what has been your experience? What role do you think peer support groups and survivor networks can play in providing particularly emotional support and guidance? Because one of the issues has been that the health system, like Dr. Madhvi was saying, is kind of stretched. So when we go to them with all this, they turn around to us and say कि अब program चलाएं या ये काम करें. This is not in our mandate. So how would you think the role of this can be important? Thanks, Chapal. I think it's invaluable. The doctors do wonderful work, and all of them are so stretched in the diagnosis. और लेकिन हमारे लिए बहुत confusing होता है, as I said even earlier, and और हमें पता भी नहीं चलता है because of all the stigma के, has anybody else had this experience? ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि हम लोग व्हील को रीइन्वेंट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट हैज टू चेंज, डू आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली, अगर मैं औरत हूँ तो मेरे ड्यूटीज का क्या होगा, व्हाट डू आई डू विद माय हस्बैंड. इट्स ऑलमोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर फिगरिंग आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और एक चीज और होता है कि कभी कभी जो हम लोग community बोलते हैं, but there's also the stigma that comes into that. So like for example, there was a young boy from Indore who contacted me, and he could not tell anybody in his immediate vicinity, and so then asked one of us and said that, listen, can somebody support me through this? So community बहुत important होता है, because it's also a very lonely journey, and very big elements of this. One, a shared experience, even from work around depression and counseling, we found that surprisingly, even if we cannot give one-on-one counseling, group counseling and the idea of peer and a shared experience can be very powerful in the healing process. तो ऐसे studies को leverage करके bring that learned experience to the TB community program becomes very, very important, and an essential part of not just completion, but also holding your mental health in place until we reintegrate with society again. A lot of practical advice, what to eat, how to speak to employers, what to tell my mother-in-law, what to tell a partner. All of these things become very, very important as well. There is a bit of a challenge. कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि एक बार मेरा TB खत्म हो गया तो मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, like I don't even want to talk about TB anymore, and so therefore getting survivors into a peer network
sometimes can be hard, but I think for every person that wants to move on with their life, there are others who want to give back as well, that we've survived something so devastating and we don't want other people to go through with it. So the argument ke log aate nahi hai survivor groups ke liye, ya वो लोग सिर्फ अपने life के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, I don't buy that argument. It also becomes very important as a survivor network because we are numbers, that we can advocate for policy change, we can empower, as Lance said earlier, we can advocate for better patient care. And I think something very important for TB is just hope and inspiration. Hope makes such a difference. It adds a whole new element to the prognosis and to the, I hope, to actual statistics in terms of what our chances of success in overcoming and healthy life beyond TB can be. Thank you. Those are very important points. And we've already started getting questions. So I'm actually going to shorten my list of questions because I think we should let our folks. You highlighted a lot of issues around psychological challenges, emotional challenges. Lance, I want to turn to you because you're a treating clinician and you see this on a daily basis. But really, there is no system for helping people with mental health challenges associated with TB. Mansik tanav, cycloserine. I mean, I can go on and on, but कि दवाई से भी होता है, स्टिग्मा से भी होता है. हम स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ को साथ साथ बात करें. अगर हम जेंडर माइनॉरिटीज, LGBTQI और औरतों की बात करते हैं, तो ये किसी और ही लेवल पे चला जाता है, क्योंकि वो तो कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो जाता है कुछ हद तक, कि इनको ही क्यों हुआ. बातचीत होती है बड़ी, और लोगों को एक सेल्फ स्टिग्मा भी दिया जाता है, वो खुद ही एक्वायर कर लेते हैं कि मेरे में ही कोई खराबी है. तो ये इसका जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है, और दिस क्रिएट्स ए ह्यूज नेगेटिव सेल्फ इमेज, एंड अपने आप की भी रिलेशनशिप खराब हो जाती है. तो हाउ डू वी, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू थिंक दैट कैन बी used to address some of this in the healthcare system? I know you're from the private sector, but still, you see some of the more difficult cases. No, I think unfortunately, when we talk about diseases like tuberculosis and we say healthcare, we just think about doctors, right? And I think one of the important first steps is uncoupling healthcare and from just the medical care that a doctor provides. And we all know that doctors are overburdened in terms of the quantum of patients that they see in a given day. So I think supportive services become extremely important. So I'm fortunate enough, for example, at Hinduja we have a PPM model that works, and we've been recipients of philanthropy from the Hinduja Foundation, which lets us have a dedicated research associate, a dedicated psychologist, a patient support provider, who then has these broader conversations with patients once they leave my room. So I give them a prescription, but I know that they will then move on to this dedicated space where they can have these conversations. And very often it's my research assistant, or it's very often the so-called case manager, who would then come up to me and say, listen, I think there is a problem with this drug. I think this person is having these side effects. Would you want to look at alternatives? Would you want to look at different ways in which we can reduce the toxicity associated with drugs? So I think these longer conversations need to move out of doctors' clinics and move into some sort of a support network. And I'm not absolving doctors of their responsibility. I think as doctors, we need to watch out for subtle cues and signs of depression, of somebody struggling to go through with treatment. We've been very conveniently labeling people as non-compliant, defaulters. We've used a lot of stigmatizing language in the past without bothering to try and understand why our patients don't necessarily adhere to treatment and what their journey is like. So, I mean, to answer your question, I think, standardized ways in which we could screen individuals for depression and mental health issues would be great, just from an operational perspective. If we could have standardized questionnaires for all of our patients. And of course, if we could create some sort of support networks. I know these things cost money. I know you need funds to do things like that. But we need to figure out ways in which to best support our patients. And Survivors Against TB is a great example of one such way of doing things. But I think this needs to be done in a more formal way if we want to reach out to most of our patients going through a tough time during treatment.
No, I agree with you. And I think one of the important things, of course, is funding. Because if all our funding is going to go into diagnosis and treatment, and we cannot focus on, things like nutrition or mental health support or something, then we are also kind of, uh, you know, taking two steps forward but one step back all the time, which is not the best approach. Madhvi, we spoke a little bit about this, but you have been observing the narrative on TV now for several decades. जो टीवी पे बातचीत होती है, अभी हमने देखा कि एक जो लेटेस्ट मेटा एनालिसिस आया है, हम तो सारी जब से टीवी में काम कर रहे हैं तब से सुन रहे हैं खांसी के बारे में। अब खांसी ही नहीं है इतनी ज्यादा प्रेवलेंट, तो मतलब कि एक तो ये नैरेटिव हो गया है। दूसरा, मीडिया का क्या रोल है? Because recently I was doing a podcast with somebody and they turned to me and they said, how alarmed should we be? And I told them, please stop using these words because you are not doing any service to the TB affected individual. Please, that is not the way. TB can affect everyone. So what is the role of media and communication channels in reshaping our public perceptions and also understanding towards affected individuals, particularly vulnerable groups, जो बिल्कुल ही फ्रिंजेस पे हो गए हैं सोसाइटी के, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बात करें तो। Chapel, I think the role of media is huge, and in a world which is so connected now, it can work both ways. So, I mean, the researchers work in their own areas, the clinicians are doing their work, and survivors are doing their work. But each one of us need to talk to each other. And the other thing is that the way it is communicated, as you said, there is one way is to sensationalize it, but the other way is to keep it simple, communicate it in such a way that it is translatable, it reaches the policymakers. तो हम सब ने मिलकर ये बहुत जरूरी है कि मीडिया का जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रैटेजाइज करना बहुत जरूरी है कि हम क्या मैसेज हम वहाँ पे भेज रहे हैं वो सोच समझ के, और उसके लिए सच्ची कोलैबोरेशन की हमें बहुत ज़रूरत है. Curating of messages, I feel the visuals, I feel the faces that we project, everything becomes very important. क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार कि हमारे डिस्कोर्स में ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, ये रिप्रेजेंट नहीं होती हैं क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स जो है वो यूनिक है. तो हमारी समझ, हो सकता है मेरी समझ केवल ट्राइबल्स के बारे में हो और मेरी अर्बन पुअर के बारे में मेरी समझ कम है, तो वो मुझे, जब तक मैं वो डिस्कोर्स नहीं करूँगी, unless I engage with people and understand all the point of view and we strategize the communication so that the politicians, policymakers take it up. So one of the important exercises I saw in 2018 was that global health strategies, mapped all the social security schemes within all the states, because all states have a lot of other things, and each one in the family will be eligible for some social security scheme. Now, see, that is there as a document. Where is it in the social media? And it needs to be updated. So if as a doctor or as a peer supporter, as a survivor or a champion, whatever you call, if I know what my patient and the family is eligible to, so that kind of thing, network is extremely important. And I feel media there, we can leverage that to a great extent. So that kind of communication, I feel we need to improve. And there are people who do a lot of trainings for media people and journalists and all. So I think that is one strategy, curating messages, making it more effective and all inclusive, most importantly. नो, आई थिंक दैट्स वेरी वैल्यूबल। बहुत ज़रूरी बात है। एक तो रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की, क्योंकि जब तक आप हर तरीके का चेहरा और हर 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 डाइवर्सिटी का चेहरा नहीं देखते, यू टेंड टू वर्क विद योर ओन मेंटल परसेप्शंस. You are wearing blinkers until somebody opens those. You continue to drive in the same direction. This is a very important thing, and I think बहुत बारी, like we say, I used to say it many times, because वो हर जगह lungs बना देते थे टीवी के लिए. So I used to keep saying कि आप जानते तो हैं कि 40% पल्मोनरी टीबी नहीं है, तो आप क्यों सबको लंग्स बना के, तो आप 40% को सेकंड कॉलम में डाल रहे हैं ना, तो उनको क्या हुआ है?
अगर लंग्स में नहीं हो रहा है तो क्या उनको टीबी नहीं है, तो अब वो क्या बोलेंगे? So a more pervasive conversation on TB is also very important. We have completely run out of time. My fault, because I've been asking so many questions. Sandhya and Yashwant, very briefly, if you could touch upon two things. एक तो स्टिग्मा की बात हमने इतनी नहीं की है. So I want Sandhya first for you to talk very briefly about what can be done around stigma, because you know through our work that stigma is all pervasive. It is also across genders, but of course more on some genders, and also class based. कि भाई टीबी है तो एक आप शायद एक एक खित्ते से हैं या एक एक पर्टिकुलर सेक्शन से हैं, तो ये पब्लिक परसेप्शन लीड्स टू फार मोर स्टिग्मा but also self stigma. So a couple of points on what you think can be done to address stigma. I think I'll pick up on points that Dr. Madhvi said both in the panel discussion here and before while we were chatting backstage. Ki the role of media, like somebody like us, all of us here in Survivors Against TB, we've made movies. There have been movies made on our lives, right? So we have shared very intimate details of our life. Let that be the story that goes far and wide. And then what we were discussing even before, which is that there are many other kinds of stories that are not being told yet, right? We're all very urban and camera friendly or whatever it may be, but we need to be able to put all of these discourses in the public domain and just bring these discussions up. I think I'll draw parallels from suicide prevention, where a lot of the trainings, and the very short trainings that are conducted, one of which is to actually name it. We're so scared to even say the word tuberculosis. And with suicide prevention, we'll ask, are you having thoughts of suicide? Now, this is complicated in TB, where the repercussions are, there's especially when it comes to infectiousness and all of that. But I think more and more of us have to understand, and we can own that story of, yes, I do have TB, but I'm able to meet you because it's not infectious or whatever it may be, but not talking about it is not the answer. So definitely media, I will say, and bringing more voices out and bringing the discourse and making it more public. Thank you. That's very helpful. Yashwant, आपके क्या thoughts हैं इसके बारे में? थोड़ा सा कुछ बताइए. So, स्टिग्मा को टैकल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस, advocacy from the medical experts and survivors also. So it will help to tackle the stigma. Also using the new age gadgets and tool like Sandhya said, meta and social media, है ना? And also the modern day celebrities and influencers, ना? So they can play a vital role in mitigating stigma. I think it's very helpful also because देखिए जब हमने काम किया था अमिताभ बच्चन के साथ, it was so amazing when he came out and said that मुझे टीबी हुआ था. Of course इसका अब तो वो पुरानी बात हो गई, 15 साल पुरानी बात. But जब हुआ तो it was a revelation because a lot of people turned around and said इनको भी हुआ था. तो अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार को हो सकता है तो हमें हुआ तो कौन सी बड़ी बात है. तो बट दीज स्टोरीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन. ये बात भी सही है कि एक अमिताभ बच्चन होते हैं और उसके बाद बाकी लोगों ने कौन फॉलो अप करता है. बिकॉज सो मेनी सेलिब्रिटीज दैट आई हैव आस्क्ड हैव टर्न्ड अराउंड टू मी एंड सेड we'll work on women's health, we'll work on this, we'll work on X, but don't ask us to work on TB, because A, I don't know anything about it, and B, it's not so exciting. So I keep telling them ki it's killing so many people across the world daily. If this is not exciting, what is, in the sense of you actually making a difference through your work. So on that note, I think I wanted to thank all of you for joining. I know it's Saturday evening and yeah, you've all made you have other things to do, so I'm very, very grateful. I do want to take a moment to record some of the people who made the comments. Dr. Amita Singh, I think, is here, who has mentioned that she's a healthcare provider in the armed forces, and there is no policy regarding availability of DOTS medicines in our setup, as well as the registration of TB cases sometimes lacks. This is an important point because I think data in today's world, and especially in a very data-driven program like TB, jahan numbers mean so much,
This is an important point. And availability of DOTS medicines in our setup, well, currently we are facing some challenges with DOTS with medicines in the public sector, so it is certainly a challenge. And Dr. Arshia Sultana, who is also here, and of course, we also have a TB patient here. I just want to say, Veenaji, that we can't answer medical queries on this. It's not entirely correct, but I'm sure if you reach out to us on email, we will connect you to an advisor who can help you out. Unfortunately, the latest Telemedicine Act forbids giving any such uh, medical consultation online like this without appropriate paperwork. So we are happy to help you. Thank you so much for joining us on this panel. And as a lead to World TB Day, we are extremely grateful for your time. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you.